Every individual has a dream to own a house for themselves and want to make their home decorative, colorful and well planned. जी हाँ, हर कोई चाहता है कि उसके रहने व काम करने की जगह सबसे अलग हो. Hello to everyone. I am interior designer Anuj welcomes you. In this session, we will explore the field of interior designing and its importance. इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की पहली ज़रूरत होती है. इसीलिए हर तरह के बिल्डिंग के इंटीरियर से जुड़े होने के कारण इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज बेस्ट करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम माना जाता है. तो आइए समझते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग है क्या. Interior design is not just about the looks of the building interior, but it also plays the key role in its functionality. Interior design is not stands with architectural looks, but nowadays it also relates with human lifestyle. Interior design is a process that provides its customer with a set of pleasing efficient solutions for a better use of available space. The goal of interior design is to improve the user's experience by better managing space in the intervened environment. तो आइए समझते हैं स्पेस प्लानिंग क्या होती है. प्रॉपर स्पेस प्लानिंग से आप छोटी से छोटी जगह को भी मल्टी यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, एक 2 सीटर सोफा को किस तरह से सिंगल और डबल बेड में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही इसमें डिजाइन किया हुआ वर्किंग काउंटर की पोजीशन भी बनी रहती है. इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि एक 2 सीटर सोफा दिखाया है जो कि देखने में काफी मॉडर्न दिख रहा है. इसको मैकेनिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह बंक बेड में कन्वर्ट हो सकता है, वो भी बिना किसी स्पेस लिए. रहा फर्नीचर जिसको कि आप कॉर्नर टेबल भी बोल सकते हैं या एंड टेबल भी, जिसके काफी मल्टीपल यूज आप कर सकते हैं. जैसे कि इसको आप एज ए रिक्लाइनर यूज करें या फिर इसको आप सिंगल सीटर बना दें या फिर फ्लोर सिटिंग. इमेज में भी आपको यह सोफा ही नजर आ रहा होगा, पर यह सोफा नहीं, सिंगल ट्विन बेड है जिसको कि एक दूसरे के ऊपर ओवरले किया हुआ है. इसके इसी फीचर्स की वजह से इसको स्टैकिंग बेड भी बोला जाता है. The floor space you can arrange furniture on wall. जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मार्केट में अवेलेबल कुछ फिटिंग्स और फिक्सचर्स की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं. यहाँ दिख रहे इमेज में आप गौर करेंगे कि किस तरह से डाइनिंग टेबल और ट्विन बेड को वॉल पे माउंट किया गया है. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको अनफोल्ड किया जा सकता है. Introduces people to beauty, relaxation and modernism. Interior designing is an important technique that is given a high attention all over the world nowadays. Demand of people to having a nice and attractive design for private and public building is increasing day by day. और हो भी क्यों ना, हर बिल्डिंग का वेल इंटीरियर होना आज की सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है. With globalization, the influence of Western culture in the country is increasing. Apart from this, the overall look of the offices is changed with the arrival of multinational companies in the country, who changed the office trends in few current years. All these shows the value and importance of interior designing nowadays. Now move to the next, we will discuss what is interior designing. Interior is all about how we experience spaces. We can say it is a powerful, essential part of our daily lives and affect how we live, work, play,
entertain. It also affects our lifestyle, choosing color combination, selection of furniture and furnishings, placement of lightings, landscapes, etc. तो एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक प्लानिंग हमारी रूटीन इरिटेटिंग एक्टिविटीज़ को भी स्मूथ बना सकती है। आइए अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कुछ डेफिनेशंस पर नज़र डालते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ बोथ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड साइंस which involves improving the interior space of residences or workplaces to make it functional and aesthetically pleasing. Or interior designing is the art and science of enhancing the interior beauty of building to achieve a well-mannered, more pleasing and functional for the people using the space. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही डेफिनेशन में लुक और फंक्शनैलिटी के साथ साथ आर्ट और साइंस पे भी जोर दिया है। तो आइए समझते हैं आर्ट और साइंस का इंटीरियर में क्या रोल है या इसको हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। Art is the expression of application of creative skills and imaginative vision into a visual form, such as sculptures, paintings, or any kind of art pieces. It is a diverse range of human activity in creating and performing artifacts. Art is often considered the process of arranging elements in a way that appeals to the sense or human emotions. Science is the practical activity encompassing the systematic study of the structure or any system of knowledge that is concerned with the physical world. A science involves pursuit of knowledge covering general truth or the operations of fundamental laws. तो यहाँ तक बात हुई आर्ट एंड साइंस की। अब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आने वाली कुछ टेक्निकलिटीज़ को भी ब्रीफ में समझ लेते हैं। Interior designing is a multifaceted profession that includes conceptual development, researches, programming, space planning, site supervision, inspections, construction management, leadership, coordination between agencies, execution of the whole design process, and finally evaluation. Interior designing is a given task to make indoor spaces functional, safe and beautiful by determining space requirement and selecting essentials and decorative items including lighting, colors, finishing materials through design process. So here we can conclude that interior designing is a technical process because it involves a deep understanding of art fundamentals and creative principles in every steps like 3D modeling, material database, mood board, color theories and psychology, anthropometric and ergonomic study, human behavior and engineering methods, which might be presented as creative solution. Interior designing is not only about physical appearance of any building but also about how it plays a vital role in its functionality. A massive building can lack space if it has a poor interior planning, while a small home can be a cozy and spacious with enough movement for activities.
Therefore, you cannot reduce its importance when planning construction of residential and commercial spaces. A correct and well-planned interior design can optimize better space of any given area, whereas a poorly designed building might be massive and it may not be as functional as needed. Hope here you totally understand what interior designing is. Now let's have a look on specialized areas in this profession. The interior design industry has a range of specialized fields. As the industry keeps moving, interior designers are redefining their roles in this profession. While most of people are of the opinion that the scope of interior services is confined to the inside of building, पर ऐसा नहीं है. आप सोच नहीं सकते, interior design is now become a huge industry having so many career opportunities. Here you can become a specialist in a specific field. If you are thinking about residential designer, then you have to decide what kind of residential specialist you want to become. Or if you are deciding to become retail designer, then you have to decide what kind of shops or showrooms specialist you want to become. अगर हम रेजिडेंशियल एरियाज़ को कैटेगराइज करें तो हम बात कर रहे हैं बेंगलोज, अपार्टमेंट्स, पेंटा हाउस, स्टूडियो फ्लैट्स, विलास, हाउसिंग सोसाइटीज़ या फार्म हाउसेस की. बिकॉज ईच हाउस is different from the other in terms of architecture and looks. This is also because each serves different aspects in accordance with the demographic, climate and the local lives in that particular area. इसी तरह रिटेल इंटीरियर में मॉल्स, शॉप्स, शोरूम्स, सुपरमार्केट जैसे एरिया आते हैं. हॉस्पिटैलिटी एरिया, जो कि आज एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है, मीन्स होटल्स, जिसमें आपके स्टार और ग्रेडिंग सिस्टम से होटल को कैटेगराइज्ड किया जाता है. टूरिज़्म सेक्टर के साथ साथ फूड इंडस्ट्री भी हॉस्पिटैलिटी का ही पार्ट है. फूड एंड बेवरेजेस को भी फास्ट फूड जोन, मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, फाइन डाइनिंग जैसे एरियाज में सेग्रीगेट किया जाता है. एजुकेशन सेक्टर्स में आपकी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, प्ले स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स आते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, एमएनसीज, इंडस्ट्रीज़, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, लाइटिंग डिज़ाइनर, एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट एरियाज़, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एरियाज़, लैंडस्केपिंग डिज़ाइनिंग और भी बहुत, जहां इंटीरियर डिज़ाइनर व आर्किटेक्ट की डिमांड बनी रहती है. आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स पर.
तो इस सेशन में हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इसके स्पेशलाइज्ड एरिया को डिटेल में समझा. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन with new topics, design fundamentals.